are given array, and in this array you need to find whether there exists a 132 pattern or not. What is a 132 pattern? It's like three length subsequence in array, okay, which is formed by using index I, j, and k, right? Such that I less k, and this nums I, nums j, nums k should form a this 132 pattern, which means that nums I should be lesser than nums k, should be lesser than nums j. So nums j is the largest and j is the middle one. So middle one should be the largest, then nums k, then the right side one should be second largest, then the third last is the left side one. So first your j should be greatest, the element present at the middle index should be greatest, element present on the right of the middle index should be second greatest, and the element present on the left of the middle or the leftmost element should be the least. In this case there does not exist, in this case there does exist, like 142. In this case there does exist, like um, you need middle to be greatest, so let's have 3. This to be second greatest, so let's have 0 and minus 1. Yeah. Similarly, minus 1, 2, 0 is also a. How do you get that? Now, this is a. How do you approach this kind of problem? So, again, like what knowledge do you need require to do this problem correctly in the first go? Let's talk about that. Or what are the some yeah patterns that you must have done to get this question correct, and how do you learn to make these question correct? So the thing is called constructive algorithm. This question, like, how does it question seem to you? Okay, this looks like okay. I need to do something in the array, but to get these three indexes, it's not a general data structure question. First of all, this thing is very clear. Uh, you can treat it as, but look, the data structure which we will be using, it's not so general one to call it like yeah, or even it is not so uh, it's can be seen as very trivial, or it is not be seen as not very general. But the algorithm still, even after knowing the data structure, you would not know the algorithm. That is a high chance. Just if I tell you the data structure, which data structure I'm using, you will not be able to come up with the algorithm if you have not like done what I said, constructive thing. It's about thinking, okay? Constructive is about thinking, and about something which is not very general. And as I said, that three indexes can be found out in, I was trying to show you the time complexity. Three indexes can be found out using n cube time complexity. I can select anyone from here, then select anyone from here, and then select anyone from here, I, j, k, right? So that is approximately n square n cube you can do, but the time constraints are there. N log n, or order of n. What we are doing at the end is order of n. Now, how do we get this in order of n? Okay, this is the reason why there are most likes. Now, how do you get this in order of n? As I said, the constructive algorithm. Now, let me tell you the. And also, if I say just you would have done something like stack. Okay, you can see stack and monotonic stack. So even after seeing this, you have got some clarity. Okay, what is monotonic stack? Elements are continuously either increasing or either decreasing. So I'm maintaining either ascending order or decreasing order. What should we maintain? You can maintain ascending order if you have want to get for 1 3. That is one thing. So if I maintain ascending order from the beginning, right, and I say that the next element which I need for representing 2 is something which should be lesser than my stack top. Okay, if I'm maintaining ascending order and stack top is the 3, but there must exist some element which should be lesser than 2. So what I need is the minimum element from the left hand side. It should be lesser than 2. Minimum element, what? Such a minimum element that has like 3 after it and before 2. So there is something like 1 which is there, which is the minimum element, but just after that there is a 3. So this is, let's say, the second yeah. And now when we go for 2, so 2 must see 1 and 3 both on the left side, and 1 should be very small, and 3 should be big. So one way is to hide 1, and if 1 is hidden and we have stored 1 in something like s1,
So S1 is something like minimum of S1 comma options. So we see all possible options, and we try to minimize S1 as possible as we can, because in that way we will be catering more of the integers as a 2, because for them the condition is they should be lying in the range from 1 to 3. Now 3 is something which I will try to look for, which is like, okay, I can obviously look for what is the maximum in this complete thing, in this left part, but that maximum should have something on its left part, right? It's not like that maximum comes on the first index and there is nothing on the left, so you don't have one, you have just three. So there should be that such maximum which is hiding something behind it, and that something is something like S1, which we are trying to minimize, so that S2 when comes up he says, okay, I'm lesser than 3, but I'm also greater than 1, because S1 is very small. So that is one way. So now how do you get this? So to do this, you somehow maintain monotonic increasing stack, okay, pushing elements from the 0 to n, left to right. So you push element, fine, then you see some bigger element coming up. Oh, okay, you push that, okay. Hmm. But then it's not an increasing anymore, right? Because when you see bigger element, you will remove the first element, and you see, okay, 3 is there. One is removed, one is stored as S1. Is minimum of 1 comma this option, okay. Now new element comes up. You see whether it is greater than S1, okay, and less than S3, okay. So then you can go for it. Okay, let me just plug in the charger, man. 1 second. After this, what you can say ki, okay, my 3 is greater than something the element, my stack top is greater than something the element which is coming up, and I'm sure that S1 is all less than that element, so I can return 1. Okay, so the condition for that, let me write the code. So stack is I'm maintaining n and S3. Now instead of this S1 I will maintain, okay. This is the another approach which I did using monotone decreasing stack, but still the stack is decreasing. We are just proceeding from right left to right. I'm just seeing whether it's possible to get from left to right. Really, for I 0 to n, I will maintain my S1, and S1 is equal to अभी तक के लिए मिनिमम चाहिए ना हमें, तो इसको 1E9 से असाइन कर देते हैं. Now you see if a of I is lesser than s dot top, else if it is not, so AI is coming up. Now while into the stack s dot size, and if s dot top is smaller, eh, yes, if it is greater then it just comes on top of it. Then how it is decreasing? I want it increasing so that the last element is greatest. How do you get that? So if I want last element to be greatest, so I say if the, don't take it. Are you saying that? Then you remove every element which is bigger than that. Okay. Are you sure it is going to work? Not really if I remove. Okay, now what I know is that if stack top is greater than this element, okay. If this element is, if stack top is greater than this element, then we are able to do this, and this should be condition now.
So I would always want this element to be replacing stack top only if it is greater. So I would say while stack top is okay, why do I replace something now? If AI is greater than stack top, say that okay, S1 is there now as AI. S1 को तो minimize करना है हमें. हाँ हम कह सकते हैं ना एक सेकंड रुक जाओ. AI S1 is equal to minimum of S1 S dot top S dot pop. तो अभी क्या हुआ? The new element came AI. It was greater than the current top. Okay. So now the AI would be my representative for all the right elements to see that okay, am I smaller than AI? Okay, fine, I'm smaller. Am I greater than S1? Okay, if I am, then return 1. Yes or no? Then one of this thing should be implicit key that you should not need to mention that okay, the current element is smaller than AI. Look, that is very not a good thing to say. But then the second thing which should be implicit, that is very good thing to say. If I try to maintain this ascending order, then I am sure that S1 is less than S3. That is very true. Okay. I just need that if there exists some 2 or not. If there exists some 2, then it's fine. If S2 does not exist and it is greater than 3, then it replaces this. How do you know the minimum in that? Somehow I need to get rid of 1 and put like 3 and 2. So the smallest element from here should come up, which means this is a decreasing. Does not make sense to have it as a decreasing. Then no way to go from 0 to n minus 1. Doesn't look like. Because what was the benefit of going from right to left, okay, is that कि मैंने 3 2 को maintain कर रखा है अपने monotonic stack में. Okay, like हम right to left जा रहे हैं और हम increasing monotonic stack maintain कर रहे हैं. Element आया उसको डाला. अब जो next मतलब इससे previous element है, if it is greater तुरंत डाल दो, ठीक है. Order तुम्हारा maintain है, decreasing order kind of. और अगर बढ़ा रहा है तो डाल दो, और अगर बढ़ा रहा है तो डाल दो. एंड S3 हमारे पास स्टोर्ड है. व्हाट इज S3? S3 वो है कि जब एलिमेंट आपका बड़ा आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं और फिर उसको डाल रहे हैं. जब एलिमेंट आपका छोटा आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली पुश कर रहे हैं. तो ये असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. तो जैसे अब 1 आया, ठीक है, डाल दिया. बट अगर 4 आया होता तो मैं 2 भी निकाल देता, 3 भी निकाल देता और 4 अकेला पड़ा होता. इसका क्या मतलब है कि S3 इज मिनिमम ऑफ 2. तो S3 2 हो गया. मिनिमम ऑफ 3 तो 2 ही रहा, क्योंकि 4 के बाद 2 एक ऐसा है जो मिनिमम है. ठीक है, दैट इज वन थिंग. हो सकता है उससे पहले ऑलरेडी S3 1 हो. तो मेरे को S3 मतलब यानी कि मेरा जो 2 वाली चीज है, जो मेरा K है, इंडेक्स K है, वो मेरे पास मिनिमम पॉसिबल है. सच दैट कि मेरे पास उससे बड़ा एक पॉसिबल बड़ा भी अवेलेबल है, कि मेरे पास S3 भी हो गया और मेरे पास S2 भी हो गया. S2 इज माई J इंडेक्स, S3 इज माई K इंडेक्स. ये दोनों मेरे पास फिक्स हो गए. कैसे? क्योंकि मैंने ये बोला
कि अगर जे छोटा आता है तो डाल दो, ठीक है, चुपचाप। अगर जे बड़ा होता है तो उसको पहले पॉप करो, जो ऑलरेडी टॉप पे है, ठीक है। मतलब जो ये नया एलिमेंट आ रहा है इन मतलब प्रोसेसिंग राइट टू लेफ्ट, पहले n-1 आएगा, n-2 आएगा, n-3 आएगा, n-4 आएगा। तो अगर ये एलिमेंट 2 जो है छोटा है तो डाल दो, और ये बड़ा आ रहा है तो मेरा सारे निकाल दो जो इससे ऑलरेडी छोटे हैं, ठीक है। सो इधर से कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि 3 ऑलरेडी बड़ा है, बट 4 के बाद अगर 2 होता तो 2 निकल जाता, ठीक है। 2 मतलब एक्स्ट्रा टॉप पे 2 पड़ा है और करंट एलिमेंट मेरा 4 आया, तो 2 निकल गया, फिर 5 पड़ा है, ठीक है। तो 4 ने मिनिमाइज कर दिया S2 की, S3 की वैल्यू, मतलब लाइक जो मेरा के इंडेक्स है उसकी वैल्यू मिनिमाइज कर दी। अगर 2 से बड़ी होगी तो वो 2 हो गई, ठीक है। तो दैट मेक्स सेंस दैट कि मेरे पास 4 भी है और मेरे पास 2 भी है, और 2 मिनिमम है जो हो सकता है, ठीक है। और अगर इसके बाद एलिमेंट 1 आता है तो वो देख के ये चीज़ हो जाएगा ठीक, क्योंकि तुम 2 से बड़े हो, 2 से छोटे हो, 2 से तुम्हें छोटा होना चाहिए, तुम 2 से छोटे हो, ठीक है। तो रिटर्न 1 कर दो। S3 को हमें मैक्सिमम करना था, सॉरी, S3 को हमें मैक्सिमम बनाना है कि लाइक 4 के बाद 2 आ रहा है तो ठीक है, 4 के बाद अगर 3 आ रहा होता तो और भी अच्छी बात थी, क्योंकि फिर चांसेस ये हो जाते कि भाई 1 3 से छोटा है। ओके, तो ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में, राइट टू लेफ्ट। S3 को मिनिमम -1 E9 कर दिया। बड़ा चाहते हैं कि हम S3 बड़ा मिले हमें, ठीक है, ताकि हमारे S1 की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएं। AI कैन बी S1 इफ AI इज लेस देन S3, बिकॉज हमें पता है कि S2 एक एग्जिस्ट करता है जो S3 से बड़ा है। वो क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि S3 अभी मोनोटोनिक स्टैक में नहीं है। S3 मोनोटोनिक स्टैक में क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसा S2 आया जिसने S3 को निकाला। इसका मतलब कि पहले एलिमेंट थे, एक बड़ा एलिमेंट आया, उसने टॉप को निकाला, और टॉप को निकाला, फिर टॉप मेरा S3 के एलिजिबल हो गया कि ओके इससे बड़ा एलिमेंट ऑलरेडी आ रखा है, एंड ये इसको अपडेट कर लो, अपने S3 को अपडेट कर लो और उसको बड़ा बनाने का ट्राई करो कि भाई इतना बड़ा S3 है बट इससे बड़ा एलिमेंट भी ऑलरेडी है, सो दैट माई S1 के लिए पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाए कि उसको बस S3 से छोटा होना है। सो दैट्स द लॉजिक कि अगर S1 S3 से छोटा है तो रिटर्न 1, अगर नहीं है मतलब जो एलिमेंट आ रहा है देयर इज अ चांस कि वह स्टॉप से बड़ा हो या ना हो, और बड़ा है तो S3 के लिए पॉसिबिलिटी खुल रही है, बड़ा नहीं है तो पुश कर दो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ गया तुम्हारा। अगर हम ऐसे ही लेफ्ट टू राइट आते हैं, हमने ये नहीं मिस कर दिया कि बड़ा नहीं है तो भी हम पुश कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास S1 है, S3 है, हम S2 के लिए देख रहे हैं। ओके, अगर S2 S1 से छोटा है, नहीं मेरे को तो बड़ा चाहिए, ठीक है। अगर नहीं, हमें S1 हमारे पास पता है ऑलरेडी, अगर S1 मेरे पास इतना आ रखा है कि मेरे को ये पता है कि भाई S1 के बाद एक S3 एग्जिस्ट करता है जो S1 से बड़ा है, और अभी जो S2 है वो हमारा S1 से बड़ा है, तो ठीक है, ठीक है, बट उसको S3 से छोटा होना चाहिए ना। तो S2 को हम बस S3 से कंपेयर करें क्या? करना तो S1 से चाहिए, तो अगर S2 अगर S1 से बड़ा है तो रिटर्न 1 कर दो, और नहीं कर सकते ना, कंडीशन S3 की चेक करनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट से दैट S3 S2 से बड़ा है, यू जस्ट से दैट S1 और S3 ऐसे हैं जो S3 से बड़े हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये बताना है कि S3 और S2 क्योंकि एक साथ है, समझ रहे हो, 3 2 3 2 3 2, 1 और 3 के बीच में घुसेड़ना मुश्किल है। S3 और 2 और तुम्हारे पास है तो 1 घुसेड़ना आसान है, ठीक है, इसीलिए हमने उल्टा चले। बट अगर तुम्हें आगे से चलना ही है तो तुम कंडीशन दोनों चेक करोगे, अगर वो है तो रिटर्न S2 कर दोगे, मतलब 1 रिटर्न कर देंगे हम, और वो नहीं है तो अब चांसेस है कि S2 S3 से बड़ा हो या S2 S1 से छोटा हो। अगर S1 से छोटा है
तो हम कुछ नहीं करेंगे S2 के साथ और उसको भगा देंगे। पुश कर देना चाहिए। ओके, और अगर S2 S3 से बड़ा है तो हमें S3 को मिनिमम के लिए यूज करना चाहिए। हमें ये सब मिनिमम के लिए यूज करना चाहिए। S3 से बड़ा पुश कर देना चाहिए। पुश कर देना। आई थिंक इसमें हमें S1 और S3 दोनों मेंटेन करने पड़ेंगे। AI is S2 is a maximum of S2 का stop, क्योंकि अब stop होने वाला है। ठीक है ना, एलिमेंट इसका आगे आने वाला है। 3 इसमें आंसर क्या है? 142 एक आंसर है। ठीक है, 342 भी एक नहीं है। अच्छी 142 की रही देखते हैं।
3 आया, पुश कर दिया। हाँ, पुश कर दिया। 3s3 हो गया, s2 हो गया, 1 आ गया। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं। यार आई थिंक बेटर रहेगा कि तुम राइट टू लेफ्ट ही जाओ और 3-2 को मेंटेन करो विंडो में, स्टैक मोनोटोनिक स्टैक में। और 1 आएगा तो उसके लिए चेक करो कि ये S1 आ रहा है, ठीक है, क्या ये S3 से छोटा है? S3 वो है जो छुपा हुआ है, यू कैन नॉट सी। तुम S टॉप को देख सकते हो जो कि तुम्हारा बड़ा एलिमेंट है, राइट? ओके, सबसे बड़ा एलिमेंट है वो S2 की तरह सर्व कर रहा है, एंड उसने कुछ एलिमेंट छुपा रखे हैं अपने पीछे जो उससे छोटे हैं। तो तुम्हें बस ये चेक करना है कि जो छोटा एलिमेंट है वो तुम्हारा S1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है?